All right, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are all well. So in the previous session, we we solved the difficult questions from paper ones of November 2022 session. Now, in this session, we will be doing the difficult questions from paper twos from this session, November 2022. Let's begin with this. But before we do that, just a reminder that you'll find a lot of other helpful content in the description below as well. You can find a playlist that covers almost the complete AdMath syllabus. You can find the link to that in the playlist below, in the description below. There's also another link to a playlist that has quick revision videos on a number of topics that a lot of students find extremely helpful before their exams. And also the yearly past papers playlist, in which you'll find some recent papers solved. Okay, so the plan for this particular session is that we will be doing the more difficult questions from some of the papers that you had in the November 2022 session. All right, so let's start with this. This is question number 3 from this paper. I'm starting from this one first of all. This is November 2022, paper 2, variant 2. Let's start with this one, question number 3. Okay, so it says in this question, A and B are constants. The normal to the curve y equals a over x plus 3x minus 2 at the point where x equals 1 has equation y equals 1 minus 1 over 4x plus b. We need to find the values of a and b. Now, how do we think about this? We're given that a and b are constants. The normal to the curve at this point, x equals 1, has this equation. Now, what is a normal? If you have a curve like this, now this is just a random curve. Let's say it looks like this. There's a point here, let's say. What's the normal at this point? It's going to look like this. It's going to be normal, right? Iske jo sketch hoega, it's going to look like this. Let's say this is the point where x is 1. Let's say ye point x equals 1 wala. Let's say this is the point where x is equal to 1. इस point पे उसने कहा तो normal बनेगा. इसकी equation is y equals minus 1 over 4x plus b. Now, what do we know about a normal? Normal का जो gradient होता है वो curve के gradient के negative reciprocal होता है because ये एक दूसरे के perpendicular होते हैं. Normal is perpendicular to the curve. तो जो curve का gradient होएगा इस point के ऊपर, normal का gradient उसका negative reciprocal होएगा. That's one idea that we could use here, right? We could say the gradient of the normal to the curve at this point, we can figure out what that is. It's a straight line, right? Y equals minus 1 over 4x plus b. It's a straight line. Straight line का gradient क्या होएगा? Minus 1 over 4. यहाँ पे जो x का coefficient है standard form के अंदर. So gradient of normal is minus 1 over 4. What about the gradient of the curve? Gradient of the curve when x equals 1. What should that be? That should be the negative reciprocal of this. Minus 1 over 4 का negative reciprocal क्या होएगा? 4. Right? तो normal का gradient इस point पे क्या होना चाहिए? It has to be 4. ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यूज कर सकते हैं इस चीज को कि जो कर्व की इक्वेशन है उससे अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल के इसका ग्रेडियंट निकाल लें उसको 4 से इक्वेट कर सकते हैं. उससे हमारे पास किसी अननोन की वैल्यू आ सकती है. लेट्स फिगर दैट आउट. This is the equation of the curve. The curve is y equals a over x plus 3x minus 2. How do we differentiate it? We can first of all think of, we can first of all bring x to the numerator. So that would become ax raised to power minus 1 plus 3x minus 2. How do you differentiate it? A is a constant, a remains as it is. Multiply by the power minus 1, subtract 1 from the power, plus 3x ka derivative is just 3. This is what the gradient, this is what the derivative of this function turns out to be. 2 का derivative 0 होगा, right? So ये हमारे पास derivative आ गया. अब हम क्या कर सकते हैं? We can say
when x equals 1, जब x की वैल्यू 1 है तो उस पॉइंट पे कर्व का क्या ग्रेडियंट है हमने फिगर आउट कर लिया, वो 4 होना चाहिए. So put x equals 1, इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होना चाहिए which represents the gradient that should be equal to 4. x equals 1 के ऊपर gradient की वैल्यू और डेरिवेटिव की वैल्यू 4 के इक्वल होनी चाहिए. So we can input that here in this equation. We can say 4 equals a into minus 1, so that's just minus a into x raised to power minus 2, which is 1 raised to power minus 2 plus 3. This should equal 4. And from this we get minus a plus 3 equals 4, and the value of a turns out to be 3 minus 4, which is minus 1. This is one value that we were looking for. A की value हमारे पास यहाँ से आ गई -1. ठीक है? So we have the value of a now, -1. Now the second thing that we're looking for is the value of b. How can we find that? How can we find the value of b from this? अब देखें जब a की वैल्यू आ गई तो हमारे पास इस कर्व की इक्वेशन आ चुकी है, राइट? कर्व की इक्वेशन क्या आ गई है? Let's write that down here. The curve's equation that we have now is y equals a over x, so that's -1 over x plus 3x minus 2. This is the equation of the curve that we have now. Now we need to find the value of b. This is where b is. अब देखें ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे नॉर्मल आ रहा है हमारे पास, ये पॉइंट कर्व को तो सेटिस्फाई करता है, ऑफ कोर्स ये नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करना चाहिए. सो इफ वी कैन समहाउ फाइंड the equation, the y coordinate of this point, हमारे पास अगर ये पॉइंट आ जाए, उस पॉइंट को अगर यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन में इनपुट कर देंगे तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ सकती है. सो दैट इज व्हाट वी कैन डू हियर, राइट? x की वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देते हैं और उससे क्या होगा, हमारे पास y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी. अगर इस कर्व की इक्वेशन के अंदर हम कहें लेट्स इनपुट x इक्वल टू where is that? Yeah, x equal to 1. X equal to 1 input करते हैं. -1 over 1 plus 3 into 1 minus 2. Let's see what value of y we get from this. This gives us -1 plus 3 minus 2, which turns out to be 0. इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा पॉइंट है जिसके ऊपर नॉर्मल है उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 and 0. So the equation of the normal that we had was y equals -1 over 4x plus b. This is the equation of the normal that we had. तो ये normal भी क्योंकि उसी point से pass करता है तो ये भी इस equation को satisfy करना चाहिए. We can just input that point here, 1 and 0, and see what that gives us. Y की जगह पे 0 डाल दिया, x की जगह पे 1 डाल दिया. So we have -1 over 4 into 1 plus b, and the value of b turns out to be 1 over 4 from this. And that is what we were looking for. We have the value of a, which is -1, and we have the value of b, which is 1 over 4. ये दो चीजें हमें figure out करनी थी, and we figured those out. All right, that was question number 3 from this paper. Let's move on to the next one. The next one that we want to do from this paper is question number 4. Let's have a look at this. We need to solve this equation. Log of 11x minus 8 with base 3 equals 1 plus 2 over log of 3 with base x, given that x is greater than 1. This equation को हमें solve करना है. Log of 11x minus 8 with base 3, that equals 1 plus 2 over log of 3 with base x. Now notice, we have logs with different bases here, so that's a problem, right? We can't work with this. अगर हमारी bases different होंगी तो हमें इसको सबसे पहला काम तो क्या करना है, bases को same करना है. We can use the change of base law here. Denominator में देखें आपके पास log of 3 with base x आ रहा है. अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो क्या करना पड़ेगा, ये 3 और x को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. So this could be written as 1 plus 2
into log of x with base 3. We could write it like this. And now what happens is we have the same basis for both of these logs. And now we can solve this equation. Logs वाले terms को log वाले terms को एक side पे ले जाएं. And that will give you 11x minus 8 on the left side. दूसरे log को अगर आप left पे लेकर आते हैं, that becomes minus 2 log of x with base 3. On the other side, we have 1. What we can do now is, on the left side, we can convert this expression to a single log. How can we do that? We have subtraction outside log. Log के बाहर minus हो रहा है. Right? Log के बाहर आपके पास minus हो रहा है, तो log के अंदर आके क्या हो जाएगा? Divide हो जाएगा. So this can be written as log of 11x minus 8 divided by, no, in fact, before we do that, we have to be careful. इस वाले log के साथ आपके पास 2 multiply हो रहा है. जब 2 multiply हो रहा है, तो that is a problem because इसमें क्या होगा? आप division law भी apply नहीं कर सकते. You'll have to take this 2 to the power first of all. Multiplication या division law apply करने के लिए, you need 1 outside. 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं मल्टीप्लाई हो सकता. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? We'll have to write it like this. We will say this is 11x minus 8 with base 3. Subtract from that log of x with base 3, और इसमें power 2 आ जाएगी. And this equals 1. ठीक है. Now we can use the division rule. We can say this is subtraction outside log. जब single log में लिखेंगे तो it can be written like this: log of x minus 8 divided by x squared, and the base of log is 3 here. Now we can get rid of this this log like this. We can say this 3 will go to the other side, become the base of 1, so that it becomes 11x minus 8 divided by x squared equals 3 raised to power 1. अब ये x squared जाके वहां पे multiply होएगा, and we have 11x minus 8 equals 3x squared. This is a quadratic equation that we know how to solve. Let's take all terms to one side. It will become 3x squared minus 11x plus 8 equals 0. Now we can see if we can factorize this. This can be factorized. 3 into 8 is 24. So हम 3 और 8 ही factors use कर सकते हैं. In fact, यहाँ पे we can say this is 3x squared minus 3x minus 8x plus 8 equals 0. We get 2 factors from this: 3x minus 8 into x minus 1. And we have 2 values of x from this: either x equals 8 over 3 or x equals 1. But remember, whenever we have something like this, जब आपके पास log वाली इक्वेशन है in particular, और आपके पास multiple solutions आ रहे हैं, in fact multiple solutions जब भी आ रहे हैं, आपको क्या करना पड़ता है? आपको चेक करना पड़ता है क्या वो दोनों satisfy करते हैं आपकी इक्वेशन को, या कोई ऐसा है जो satisfy नहीं करता. Let's go back and see कोई condition तो नहीं दी हुई थी उसने x की. उसने कहा है x is greater than 1. x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है. x has to be greater than 1. इसका मतलब ये है, ये जो दूसरा आंसर हमारे पास आ रहा है, this is not going to be possible. हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, so we say this is not possible. It's given in the question that x is greater than 1. So there's only one value of x that satisfies this equation then, which is 8 over 3. And that is our final answer. X equals 8 over 3. Okay. That was question number 4. The next one that I want to do from this paper is question number 6. Let's have a look at that. A 4-digit code is to be formed using 4 different numbers selected from 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Find how many possible codes there are if the code forms a number that is odd and greater than 5,000. Okay, now how do we think about this? It has to form a number that is odd and greater than 5,000. 4-digit number आपने बनाना है, 4-digit code बनाना है. Now, how do we used to think about this? We can use the boxes representation, and
try to think about how we can fill these boxes. So let's say we have 4 boxes like this. We need a 4-digit code. What's the condition? The first condition is we want to use 4 different numbers. How many numbers do we have in total? 2 से लेकर 9 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No number is missing. So we have 8 numbers in total. The condition another condition that we have is that the number has to be odd and greater than 5,000. Greater than 5,000 का मतलब क्या हुआ? ये जो first number है ना, जो first box है, इसके अंदर आप क्या input कर सकते हो? 2, 3 और 4 नहीं input कर सकते. 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से आप कुछ भी input कर सकते हो. ठीक है? So you can have 5 here, 6, 7, 8, 9. इनमें से आप कुछ भी input कर सकते हो. There are 5 possible options for this first box. तो एक तो condition first box के ऊपर है, greater than 5,000 की वजह से. दूसरी condition कहाँ पर है? The number has to be odd. Odd number का होने का मतलब क्या है? जो last digit है, that has to be odd. Last digit odd होना चाहिए. Now, how can we get an odd last digit? How can the last digit be odd? We can have 3, 5, 7, 9. इन चारों में से कोई नंबर आ सकता है. यहाँ पे 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है. Now, in how many ways can we do this? The problem is, अगर हम कहेंगे first box तो हम 5 ways में fill कर सकते हैं. What about the last box? We can't be sure about it. The problem would be कि हमें नहीं पता कि first box में क्या आया. Because अगर first box में कोई odd number आ गया, let's say 7 आ गया, तो 7 यहाँ पे तो नहीं आ सकता फिर last box में. Last box में कितनी options बची हैं आपके पास? वो सिर्फ 2 options, सिर्फ 3 options बची. और अगर first box में आपके पास even number आया है, तो फिर last box के लिए आपके पास 4 options है. तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आता है वो लास्ट बॉक्स पे डिपेंडेंट है, और लास्ट बॉक्स में क्या आता है वो फर्स्ट बॉक्स पे डिपेंडेंट है. तो आप इसको सिंगल रिप्रेजेंटेशन से नहीं कर सकते. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे. क्या केसेस? एक आप ये केस बना सकते हैं कि अच्छा फर्स्ट बॉक्स में अगर कोई इवन नंबर आ जाए. सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज वी सेइंग लेट्स से वी हैव एन इवन नंबर इन द फर्स्ट बॉक्स that is greater than 5, of course. तो क्या possibilities हो सकती हैं? Because greater than 5,000 चाहिए हमें. 6 आ सकता है और 8 आ सकता है. एक possible case हमारा ये हो गया कि 6 या 8 हमारे पास first box में आ गए. तो last box के लिए कौन कौन सी options बची हमारे पास? फिर odd number बनाना ना total. तो last box में हमारे पास 3 आ सकता है, और हमारे पास 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है. In how many ways can we fill the first box now? And we can fill the first box in 2 ways. So we have 2 possible cases for the first box. And how many ways can we fill the last box in? We can fill the last box in 4 different ways, because we can have one of these 4 numbers in the last box. ठीक है? तो first और last box के हमारे पास ये ways हो गए in the first possible case. This is the first possible case, right? What about the numbers in the middle? अब देखें, एक नंबर आपने यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में रख लिया, एक नंबर लास्ट बॉक्स में रख लिया. टोटल कितने नंबर्स थे? 8 नंबर्स थे. उन 8 में से आपने 2 नंबर्स प्लेस कर लिए. दरमियान में तो कोई कंडीशन नहीं है, इधर तो कोई भी नंबर्स आ सकते हैं दरमियान वाले रीजन के अंदर. तो बाकी 6 में से कोई भी 2 नंबर्स इधर दरमियान में आ जाएंगे. In how many ways can we have 2 numbers arranged out of 6 numbers in these 2 places? 6 में से 2 numbers को arrange करना है. That is 6p2. आप ये भी कह सकते हैं कि इसको 6 ways में कर सकते हैं, इसको 5 ways में कर सकते हैं. Because पहला नंबर 6 आया, 6 possible ways होंगे, फिर 5 ways होंगे. That's the same thing as 6p2. दोनों एक ही चीज है. 6p2 कर लें या 6 into 5 कर लें दरमियान वाले के अंदर. चलिए, this is going to give us the number of ways for the first possible case, जिसमें हमने कहा कि first box पे even number आ रहा है और end पे कोई odd आ रहा है. Let's see what this gives us. 2 into 4 into 6p2.
and that is giving me 240. This is one possibility. अब एक और पॉसिबल केस क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि फर्स्ट बॉक्स में भी एक ऑड नंबर आ रहा है, फर्स्ट बॉक्स में भी एक ऑड नंबर आ रहा है. लेट्स हैव अनदर boxes representation for that. This is another possibility now. इसको अलग अलग हमें कंसिडर करना पड़ेगा. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वी हैव द सेम 4 boxes as before. फर्स्ट बॉक्स में अगर हम कोई इवन नंबर ऑड नंबर डालते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 5 ऑफ कोर्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उसके लिए? वी कुड हैव 5, 7 or 9. So in how many ways can we fill this box now? Now we can fill this box in 3 possible ways. Okay? अब जब हमने फर्स्ट बॉक्स को फिल कर दिया किसी एक ऑड नंबर से, 5, 7 या 9 में से कोई एक नंबर यहां पर आ गया, बाकी कौन से ऑड नंबर्स रह गए हमारे पास? टोटल ऑड नंबर्स तो थे 3, 5, 7, 9. अब इनमें से एक नंबर चला गया है, एक नंबर ऑलरेडी यूज हो गया है. 5, 7 या 9 में से एक नंबर ऑलरेडी फर्स्ट बॉक्स में यूज हो गया है. तो लास्ट बॉक्स के लिए कितनी ऑप्शंस बची हैं आपके पास? अब लास्ट बॉक्स के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस बची हैं इन द सेकंड पॉसिबल केस. ऑलराइट, और फिर दरमियान वाले रीजन में क्या होगा? उसमें तो फिर वही होगा, 2 नंबर्स आपने प्लेस कर दिए हैं फर्स्ट बॉक्स और लास्ट बॉक्स में. बाकी नंबर्स कितने बचे हैं? 6 नंबर्स बचे हैं आउट ऑफ 8. राइट, तो 6 में से 2 नंबर्स आपने यहाँ पे अरेंज करने हैं, दैट इज 6p2 या फिर 6 into 5, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं. और आप देखें ये आपको क्या देता है. So now we have 6p2 into 3 into 3 and that is giving me 270. This is what we are getting from the second case. ठीक है, ये सेकंड केस हो गया. ये आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाए, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे. फिर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, देखें आपको क्या मिलता है. 270 plus 240, the final answer turns out to be 510, and that's the final answer that you have. इन दोनों को आपने ऐड कर दिया. ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. All right, okay, let's move on. Let's move on to part B now. It says a number greater than 5,000 with the last digit that is prime. All right, so again we want a 4-digit number. We want a 4-digit number. Again, we can have 4 boxes for that. We still want a number that is greater than 5,000. Okay. Remember the numbers that we have: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4-digit number chahiye greater than 5,000. Again, how many options do we have for the first box? We could have 5, 6, 7, 8, 9. ओके, फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास अब यही 5 ऑप्शंस हैं, 5, 6, 7, 8, 9. बट अगेन वी हैव द सेम प्रॉब्लम. इसमें कुछ नंबर्स प्राइम है और कुछ नंबर्स प्राइम नहीं है. तो फिर हमें प्राइम और नॉन प्राइम को अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर प्राइम हमने फर्स्ट बॉक्स में रख दिया तो फिर लास्ट में तो नहीं आ सकता वो वाला नंबर. तो फिर हमें उनको अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट्स कंसिडर वन केस इन विच the first number is a prime that is greater than 5,000. तो prime numbers कौन कौन से हो सकते हैं? 5 से बड़े numbers, 5 या उससे बड़े. So 5 is a prime. That's one possibility. 7 is a prime, and that's it. ये हमारे पास first possible case हो गया. ठीक है, अब कितने ways में हम कर सकते हैं first box को fill कर? इस केस के अंदर 2 ways में. अब last box को देखते हैं. prime numbers कौन से हैं आपके पास जो अब आ सकते हैं इसके अंदर? टोटल कितने थे, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7. ये 4 प्राइम नंबर्स हैं.
लेकिन एक प्राइम आप ऑलरेडी फर्स्ट बॉक्स में डाल चुके हो, एक प्राइम आप फर्स्ट बॉक्स में इनपुट कर चुके हो ऑलरेडी। 5 या 7 में से एक आपने वहां पे इनपुट कर दिया, तो इन 4 में से 3 रह गए आपके पास सर। तो लास्ट बॉक्स को फिल करने के आपके पास 3 वेज है। एंड देन सिमिलर टू व्हाट वी डिड बिफोर, यू हैव 6 नंबर्स रिमेनिंग, उनको आप दरमियान वाले 2 प्लेसेस में अरेंज कर सकते हो। कितने वेज में? 62 वेज में। यू कैन evaluate what this turns out to be. 30 into 6, that should be 180. That's what we get in the first case. Let's consider the second case now. सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे फर्स्ट बॉक्स में वी नीड अ नॉन प्राइम, प्राइम के अलावा कोई और आना चाहिए, 5 से बड़ा ऑफ कोर्स, बट some number that is not a prime. Okay, 5 is a prime, so we can't have that. We can have 6, we can have 8 or 9. एंड पे तो प्राइम चाहिए, प्राइम कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब फर्स्ट बॉक्स के लिए कितनी ऑप्शंस होगी आपके पास इस केस के अंदर? 3 ऑप्शंस। लास्ट बॉक्स के लिए कितनी ऑप्शंस होगी? 4 ऑप्शंस। एंड द मिडिल यू हैव 6p 2 ऑप्शंस। इसको मल्टीप्लाई कर लें, देखें आपके पास क्या होता है। 30 into 12 this time, that should be 360. Again, add these two cases and see what that gives you. In this case, that would be 540. And that's the total number of 4-digit codes that you have that satisfy this condition. And that's what we were looking for in the second part here, part B. All right. I hope that makes sense. Let's move on. That was question number 6 from this paper. Now, the last one that I want to do from this particular paper, that's question number 11. Let's have a look at this. Okay, so it says the coordinates of points A and B are -5, 6, and 4, -6 respectively. The point C lies on the line AB between A and B, such that AC over CB is equal to 1 over 2. We need to find the coordinates of the point C. Okay, so we have a point A and we have a point B. A का x coordinate छोटा है तो ये लेफ्ट पर होएगा, और y coordinate बड़ा है तो ये ऊपर होगा, लेफ्ट पर ऊपर. So let's say there's a point A here and there's a point B here. ये दो पॉइंट्स हमारे पास इस तरह से हैं. Let's say A is -5 and 6 and B is 4 and -6. ये लाइन ए बी है. इस लाइन ए बी के ऊपर you have a point C somewhere, and it's such that AC over CB is equal to 1 over 2. Okay, how do we understand this? कौन सी आपकी जो है वो साइड के करीब होना चाहिए? Let's actually put it another way. Yeah, let's actually keep it this way. It's easy to understand. AC अगर 1 है तो CB कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. तो AC का A से C का डिस्टेंस अगर 1 है तो C का B से डिस्टेंस 2 होना चाहिए. तो A के करीब है C और B से दूर है, तो C किधर होएगा? It might be somewhere here. And the argument is, if this is 1, this is 2. Actual length 1 और 2 नहीं है, लेकिन रेशियो ये है. अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना आएगा? ये 2 यूनिट्स होएगा. That's the point. Okay. How do we find the coordinates of this point C? That's the question now. अच्छा, now how do we think about this? इसके लिए या तो हम वेक्टर मेथड यूज कर सकते हैं, या हम इसको वैसे मेंटली भी वैसे इसको किया जा सकता है. अगर आपको वेक्टर मेथड आता है तो उसको आप या तो लिख के कर लें, पोजीशन वेक्टर्स यूज कर सकते हैं, राइट? दैट्स वन पॉसिबिलिटी. लेट मी जस्ट टेल दैट क्विकली. आपके पास OA वेक्टर होगा, व्हाट वुड दैट बी? दैट वुड बी -5, 6. और आपके पास एक होगा वेक्टर व्हिच वुड बी OB. कोऑर्डिनेट्स को बस आपने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, राइट? तो वो हो जाएगा 4 and -6. एंड देन यू कुड से AC vector is equal to 1 over 3 of AB vector. So AC क्या आएगा? That will be OC minus OA. And here we would have 1 over 3 into OB minus OA.
ओ ओ ए आपको पता है, ओ बी भी पता है, ओ ए भी पता है, ओ सी आप यहाँ से निकाल सकते हैं. दैट्स वन पॉसिबल वे ऑफ डूइंग दिस. ठीक है, आप उसको वेक्टर से इस तरह से कर सकते हो. बट दिस अ क्विकर वे ऑफ डूइंग दिस. लेट्स डू इट दैट वे. थिंक अबाउट इट. A is a point that is -5 and 6. ये भी एक तरह से वेक्टर मेथड ही है, लेकिन हम इसको तरह से लॉजिकली वैसे सोच रहे हैं कि ये A और B पॉइंट्स हैं. ठीक है. What do you have to do to go from the point -5 to 4? आपको कितने यूनिट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं? -5 से 4 पे जाने के लिए यू हैव टू ऐड 9 टू इट, राइट? 6 से -6 पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ऐड कुछ करना पड़ता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. 6 में से आपको 12 माइनस करेंगे तो -6 पे पहुंचेंगे. इस पे आप -12 करना पड़ेगा. Now there's a point C somewhere in the middle of A and B, and that is, let's say, here in the middle. C पे आप पहुंच रहे हो तो A से C का डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस का कितना है? 1/3. तो एक तरह से इसको ये कह सकते हैं, टोटल अगर 3 है तो दैट्स 1/3 एंड दिस इज 2/3, राइट? तो टोटल डिस्टेंस अगर +9 है तो C तक कितना हो जाएगा? C तक 9/3 हो जाएगा, यानी 3 यूनिट्स आपको जाना पड़ेगा सर. तो आप क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो A से अगर आपको C पर जाना है, all you have to do is just do +3. B पे जाने के लिए +9 करना पड़ रहा था ना, तो C पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 9/3 करना पड़ेगा. और इसी तरह से A से C पे जाने के A से B पे जाने के लिए y कोऑर्डिनेट में से आपको 12 माइनस करना पड़ रहा था. C तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -12/3. कितना? सिर्फ 4 यूनिट्स माइनस करना पड़ेगा. तो आपको C पॉइंट क्या मिल जाएगा फिर? दैट शुड बी -2, right? -5 + 3, that's -2, and then 6 - 4, that is 2. So the coordinates of C therefore should be -2 and +2. That should be your final result here. C के coordinates आपके पास ये आने चाहिए. ठीक है, so that's one way of doing this as well. आप इसको mentally भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, vector method जो proper लिख के भी कर सकते हैं. That's your choice, but this is the final result that you have then. ठीक है, let's move on. Part B of this. It says the line CD is perpendicular to AB. Find the equation of CD in the form y = mx + c. Okay, now that's not too difficult, I think. AB आपको line दी हुई है. Find the equation of CD. C point आपको मिल गया, in fact. Okay, ठीक है. So it's like this basically. There's a point A here, there's a point B here, point C यहाँ पे कहीं था. C से एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है. अब हमें नहीं पता वो D ऊपर वाली साइड पे है, नीचे वाली साइड पे. दैट्स इररिलेवेंट. D कहीं पर है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. हमें इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो. ठीक है, कैसे आएगी? ए बी का ग्रेडियंट निकाल लें, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो इस लाइन में ग्रेडियंट आ जाएगा. दिस इज द लाइन सी डी. ओके, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5 6. B is 4 - 6 and C is -2 and 2. We just found that. Let's find the gradient of AB first of all. Gradient of AB, what's that? 6 minus -6, that's 6 + 6 divided by -5 - 4, and that is going to give us -12/9, right? And that is -4/3. What about the gradient of CD then? CD is supposed to be perpendicular. वो इसका negative reciprocal हो जाएगा, which is 3/4. So we have the gradient. Gradient आ गया. Point हमारे पास है CD के ऊपर -2 and 2. We can write down the equation. We can say this is the gradient that we want to use, and this is the point that we have. We can say y - y1 equals m into x - x1.
That gives us y minus 2 equals 3 over 4 into x plus 2. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने से y equals mx plus c फॉर्म में कहा हुआ है. We have to make y the subject and see what that gives you. So we have y equals 3 over 4x plus 3 over 2, right? Yeah, 3 over 2 plus 2. And that's going to give us 3 over 4 times x plus 7 over 2. And that's the equation that we were looking for here. Y equals 3x over 4 plus 7 over 2. That's the equation of the line CD. Okay, let's move on. Now it says the length of BD is square root of 125. Find the coordinates of the two possible positions of the point D. All right, now what does that mean? Let's think about this. Make this a meter. BD is square root of 125. So we have a point B here. उसने क्या B से D का distance कितना है? Square root of 125 है. Find the coordinates of the two possible positions of point D. अब देखिए उसने possible positions क्यों कहा है? Because remember we were earlier not able to figure out कि D कहाँ पर होना चाहिए. ऊपर वाली साइड पे भी हो सकता है, नीचे वाली साइड पे भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है. तो इसलिए दो पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे D के possible, right? तो अब देखते हैं क्या करें. Let's call the coordinates of D something. Let's say D के coordinates हमारे पास हैं x, y, right? या फिर let's say they are A and B. Let's say these are the coordinates of A और B पर use हो रहा है, तो so we are ले लेते हैं PQ. These are the coordinates of the point D. Now we are given that the distance BD is equal to square root of 125. All right. Now let's apply the distance formula. We have the point B. B point क्या दिया हुआ था ऊपर? 4 and minus 6. Let's apply the distance formula and see what we get from that. Square root of x2 minus x1 whole squared. So that's p minus 4 whole squared plus y2 minus y1 whole squared. That will give us q plus 6 whole squared. Its square root should be equal to square root of 125. That's the equation that we get from this. Square roots khatam kar diya, dono sides ko square kar diya, square root khatam ho gaya. What are we left with? P square minus 8p plus 16 plus q squared plus 2 into q into 6. That's 12q plus 36. On the other side, we have 125. So we have one equation in terms of P and Q from this, and that looks like this. P squared minus 8P plus Q squared plus 12Q. If we take the constants to the other side, that gives us 125 minus 52, which is 73. This is one equation that we're getting. But we need to find another equation now because दो unknowns हैं, दो unknowns हम ऐसे तो find कर ही नहीं सकते, right? दो unknowns के लिए हमें दो equations चाहिए. Now remember, point D lies on the line CD. Point D जहाँ भी होगा वो CD के ऊपर lie करता है ना. So that means it should also satisfy this equation. जो CD की equation है उसको भी satisfy करना चाहिए. What's the equation of CD? So this is one equation that we have. The other equation would be the equation of CD that we found earlier, which is 3 over or y equals 3 over 4 times x plus 7 over 2. That is the other equation that we found earlier, right? तो ये उसको भी satisfy करना चाहिए इस equation को. तो उसके अंदर अगर हम ये point input करें P and Q, what do we get from that? We get Q equals 3 over 4P plus 7 over 2. We have another equation from here. We have two equations, equation 1 and equation 2 here. We can solve these two equations simultaneously, and that is going to give us the values of P and Q. Now, this is not very straightforward because one of these equations that you have is quadratic and the other is linear. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो linear equation है उसमें से
हम एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के दूसरी में इनपुट कर सकते हैं. We already have Q as the subject here. हम क्या कहते हैं, let's input this equation in the first equation. ये उसको उसके अंदर जाके इनपुट कर दें. अब ये वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, but eventually you can figure this out. ठीक है, तो हम ये करते हैं जल्दी से. Q की जगह पे ये डालना. Let's do that. We get p squared minus 8p plus 3 over 4p plus 7 over 2 whole squared plus 12 into q. Q is again 3 over 4 times p plus 7 over 2. That equals 73. ठीक है. This is the equation that we're getting. Now this is only in terms of p. ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. Let's solve this now. Let's simplify everything. This gives us p square minus 8p plus 3 over p ka whole squared. What would that be? 9 over 16 p squared plus 2 into this. Let's do that. 2 into 3 divided by 4 into 7 divided by 2. Let's see what that gives us. 2 into 3 over 4 plus 7 over 2. No, into 7 over 2. 2 into 3 over 4 into 7 over 2. That's giving me 21 over 4. इसमें careless errors के बहुत chances है. आपको देखना है थोड़ा सा. 7 over 2 का whole square, that is going to be 49 over 4. अच्छा, then we have 12 into this thing. 12 into 3 divided by 4, that will be 9. And then 7 into 6, that would be 42. On the other side, we have 73. उसको यहाँ पे आके minus कर दिया. This is the equation that we get. इसको थोड़ा simplify कर लें. P square वाली दो terms हैं हमारे पास. P square plus 9 over 16 P square. Calculator में डालें 1 plus 9 over 16 and see what that gives you. This is giving me 25 over 16 P squared. P वाली terms को calculator में डालें. Minus 8 plus 21 over 4 minus 8 plus 21 over 4 plus 9, and that's giving me 25 over 4. So we have 25 over 4 times p. Then the constant terms, constant हमारे पास 42 minus 73, and that's minus 31. Now we can get rid of the fraction. 16 से multiply कर दें अगर पूरी equation को, we can get rid of the fraction. 16 से multiply करते हैं, 25 p square आ जाएगा. And then we have 25 into 4, which is 100, into p, and then the constant term. Constant मेरे पास दो क्यों आ रहे हैं? वैसे 3 तो नहीं आने चाहिए थे. 12 into 17 over 2, yeah, 49 over 4 हमने ऐड नहीं किया यहाँ पे. I'm sorry about that. ये भी एक constant है. ये क्या होता है? 49 divided by 4 plus 42 minus 73. That is giving me minus 75 over 4 here. Okay. अब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 300. So we have minus 300 equal to 0 here. This is an equation that I'm getting. इसको simplify कर सकते हैं, 25 से divide करते हैं, that will give us p squared plus 4p minus 12 equals 0. Can we factorize this? We can. It becomes 6p minus 2p minus 12 equals 0. The two factors turn out to be p plus 6 and p minus 2. And the values of p that we get are p equals minus 6 and p equals 2. ये दो आपके पास p के values आ गए. Yeah, pretty complicated, but we get this at the end. As long as you don't do any careless errors, you should get this eventually. All right, ये हो गया. अब क्या करेंगे? अब इसको हम simplify कर लेते हैं और देखते हैं हमें इससे क्या मिलता है. In fact, P की values आ गई हैं. Q की value find करनी है. हमारे पास एक Q की equation क्या थी? This is the equation that we have. इसको 2 में जाके input कर दें. So we put these values in the second equation now, और देखते हैं corresponding values for Q क्या आती है उससे. 3 over 4 times P, which is minus 6 plus 7 over 2. And the second value
3/4 into 2 plus 7/2. Let's simplify both of them. Minus 18/4 plus 7/2, and that's giving me -1. And what about the second one? 6/4 plus 7/2, that is 5. So the coordinates of D that we get therefore are -6, -1, right? These two. And then the second one are 2 and 5. These are the two possible coordinates, two possible points D that we get from this. -6, -1, and 2 and 5. All right, that was question number 11 from this worksheet. from this paper, sorry. Okay, so that completes the questions that we wanted to do from this particular paper. Let's move on to the next one. And that is November 2022 paper 2 variant 3. That's the next one that we want to do now. Let's have a 30-second break. And then we start with this next one. Let me connect my charger in the meantime as well, because it's just about to die. This is the last paper that we want to do do right now. And then we end. I'll have another session after you're done with paper 1. जिसमें क्या करूँगा? June 2022 वाले papers भी करूँगा इंशाल्लाह. But that will be after paper 1. Unfortunately, आज बहुत late हो गया है. आज नहीं हो सकेगा. But before paper 2, we'll do that. And we'll also be doing some 2021 papers, inshallah. You can also find a lot of other helpful content in the description below. You can find the complete syllabus covered, almost the complete syllabus covered. There are some concepts that are missing, but most of them are covered. You also find some quick revision videos there, which a lot of students find extremely helpful before their exams. All right, let's start with this last one then. This is November 2022 paper 2 variant 3. Let's do the more difficult questions from this paper now. So I'll be doing these 4 questions, 8, 9, 10, 11 from this paper. Let's start from this. Let's start with the question that is related to kinematics. Yeah, kinematics and vectors both. Okay, so that's interesting. Particle A starts from the point with position vector 3 and -2. And it travels with speed 26 meters per second in the direction of the vector 12, 5. So this is the direction vector 12, 5. We need to find the position vector of A after t seconds. All right. Now, how do we think about this? So we have a point somewhere that is point A. Iska position vector हमें पता है. That's 3 - 2. This is point A, let's say. और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? You are going in the direction of this vector 12, 5. Okay, so 12, 5. आपके पास 12 horizontally, 5 vertically. तो इस direction में आप जा रहे हो roughly. और क्या speed है? The speed is 26 meters per second. That's the speed that you have. So per second, you're covering 26 meters. Now the problem is, we don't know कि ये जो direction vector है, इसमें आप कितना cover कर रहे हो, right? तो direction vector कितने distance के लिए दिया हुआ है. सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको figure out करना है इसका unit vector essentially, तो आप ताकि आप उसको per second के हिसाब से फिर सोच सकें. तो सबसे पहले हम ये figure out करते हैं कि इस डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है. कि 12 अगर यूनिट आप, तो उसने डायरेक्शन इस तरह से दी है कि आप जा रहे हो 12 यूनिट्स राइट साइड पे और 5 यूनिट्स ऊपर. तो बेसिकली इस डायरेक्शन के अंदर, अब इस डायरेक्शन में अगर आप इतने यूनिट्स जाते हो तो व्हाट्स द डिस्टेंस कवर्ड? लेट्स फिगर दैट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दैट विल बेसिकली बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है. वो देखते हैं हमारे पास क्या आता है. So magnitude of the direction vector, vertical lines हम use करते हैं magnitude के लिए. वो क्या आएगा? Square root of 12 squared plus 5 squared, right?
and that turns out to be 144 plus 25, which is 169. उसका square root is 13. तो distance हमारे पास ये आ गया 13. ओके तो हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन का पहले क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं. यूनिट वेक्टर कैसे आता है, 1/13. तो बेसिकली जो भी वेक्टर है आपके पास उसको 13 से डिवाइड कर देंगे. सो इट बिकम्स 1/13 into 12 5. This is the unit vector. This is the unit vector in that direction. Okay, unit vector in that direction. अब देखें उसने क्या कहा है. उसने कहा है कि हर उसके अंदर हर सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 26 मीटर्स. हर सेकंड के अंदर 26 मीटर्स कवर हो रहा है. ये कितना डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है डिस्टेंस 1 यूनिट है. यूनिट का मतलब है 1, राइट. सो हमने इसके डिस्टेंस को 1 कर दिया. सबसे पहले हमें क्या करना है, पर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 26 सेकेंड्स. तो इसको 26 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका उससे क्या होएगा, वेलोसिटी का वेक्टर आ जाएगा. लेट्स सी व्हाट दैट टर्न्स आउट टू बी. वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाता है इसमें, 26 into 1/13 into 12/5. Remember, this is a fraction, which is a number. 12/5 is a vector. तो ये वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, 26 और 13 तो कैंसिल हो गया. दिस इज 2 into that वेक्टर 12/5. जो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास यहाँ से आता है, दैट इज 24 and 10. इसका मतलब क्या हुआ, हर सेकंड के अंदर अगर आप 26 मीटर्स कवर कर रहे हो इस डायरेक्शन के अंदर, तो उसका मतलब ये है you are going 24 units horizontally and 10 units vertically. तो फिर आपका इस डायरेक्शन के अंदर 26 यूनिट्स आप कवर करते हैं, तो आप एसेंशियली आप 24 यूनिट्स राइट पे जा रहे हो और 10 यूनिट्स ऊपर जा रहे हो. ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर हो गया. तो व्हाट अबाउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए नाउ आफ्टर t सेकेंड्स. उसको हम कैसे लिख सकते हैं, OA आफ्टर t सेकेंड्स. ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट कहां से किया, स्टार्ट उसने किया 3 - 2 से. सो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. ये आपका आगे स्टार्टिंग पॉइंट. अब इसमें क्या होगा, हर सेकंड में वो इस तरह से मूव कर रहा है, 24 यूनिट्स राइट एंड 10 यूनिट्स अप. तो टी सेकंड्स में कितना कर जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय टी. तो इस टी को हम नॉर्मली पहले लिख देते होते हैं. This is the position vector of the point A that we were looking for. 3 - 2 plus t into 24 10. And that's your final answer here. All right. तो vectors के साथ आपके पास कभी कभी ये आता है kinematic. This is how you're dealing with it. Let's move on to the next part now. Now it says at the same time, particle B starts from the point with position vector 67 - 18. It travels with speed 20 meters per second at an angle of alpha above the positive x-axis, where tan alpha is 3/4. Find the position vector of B after t seconds. So now we have a point which is point B. उसके position vector या coordinates दिए हुए 67 and -18. और अब डायरेक्शन क्या है, speed is 20 meters per second, direction is 3/4. What does that mean? Tan alpha is 3/4, sorry. अब देखें, tan alpha अगर 3/4 है, एंगल क्या है, above positive x axis ने कहा ये एंगल है. tan क्या होता है, perpendicular over base. So if 3 is perpendicular, 4 is the base. तो अगर ये 4 है तो ये perpendicular कितना है, 3 है. तो इसका वेक्टर क्या बना, फिर डायरेक्शन वेक्टर क्या बना, डायरेक्शन वेक्टर इस केस में क्या बन जाएगा. रिमेंबर डायरेक्शन वेक्टर में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले लिखते हैं, सो दैट्स 4, वर्टिकल कंपोनेंट बाद में लिखते हैं, दैट इज 3. दिस इज व्हाट द डायरेक्शन वेक्टर इज इन दिस केस, 4 3. ठीक है.
Now, once we know what the direction vector is, we do exactly the same thing as before. Let's find the unit vector. इससे पहले हम magnitude निकालना पड़ेगा, right? Magnitude of the direction vector. Let's see what that is. Square root of 4 squared plus 3 squared, and that turns out to be 5. Magnitude 5 आ गया. What about the unit vector? इस डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर क्या होएगा? आपने इस वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दिया, एसेंशियली 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट्स द यूनिट वेक्टर. Sorry, 4 3 is a vector, so there's no line there inside. ये आपका यूनिट वेक्टर होएगा. अब आपको क्या चाहिए? उसने कहा है 20 मीटर्स पर सेकंड पे मूव कर रहा है. आपको ये पता चल गया इस डायरेक्शन के अंदर 1 मीटर वाला वेक्टर क्या है? 1 मीटर वाला वेक्टर ये आ गया. यूनिट का मतलब होता है 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसने कहा है पर सेकंड कितना मूव करता है. वेलोसिटी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? पर सेकंड 20 मीटर्स मूव करता है. तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो. 20 into 1/5 into 4 3, and that gives you 4 multiplied by 4 3. तो आपका वेलोसिटी वेक्टर एसेंशियली क्या आ जाता है? दैट इज 16 and 12. हर सेकंड में आप इतना मूव कर रहे हो. हर सेकंड में इतना मूव कर रहे हो. सो व्हाट अबाउट द पोजीशन वेक्टर नाउ फॉर बी इन टर्म्स ऑफ टी? ये कितना हो जाएगा? स्टार्ट उसने कहां से किया था? स्टार्ट उसने किया था 67 - 18 से. दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. अब हर सेकंड में इतना मूव कर रहा है. हर सेकंड में 16 units right, 12 units up. This is what it's moving. This is how much this is moving every second. तो t seconds में कितना करेगा? t multiplied by this, and that's the position vector of b after t seconds. That's what this turns out to be. All right, in terms of t आपके पास ये आ गया. ठीक है, ये दोनों हो गए, दोनों वेक्टर्स आ गए आपके पास. अब सी पार्ट देखते हैं. It says hence find the time at which a and b meet each other and the position where this occurs. टाइम जिस पे वो मीट करते हैं और वो किस पोजीशन पे मीट करता है. अब जब वो एक दूसरे, इफ दे मीट ईच अदर, दैट मींस उस पॉइंट के ऊपर उनका पोजीशन वेक्टर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. जो ए का पोजीशन वेक्टर है, अगर वो मीट कर रहे हैं तो उन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स जो हैं, दे हैव टू बी इक्वल एट दैट पॉइंट. वी हैव फाउंड द पोजीशन वेक्टर्स फॉर बोथ ऑफ देम ऑलरेडी. ए का पोजीशन वेक्टर भी आ गया. वो क्या है? 3 - 2 plus t into 24 10. अच्छा, बी ने भी उसी सेम टाइम पे मूव करना स्टार्ट किया था, तो इसका भी वही टाइम है. उस तरह से टाइम सेम है दोनों का. और इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया? 67 - 18 plus t into 16 12. So these two vectors are supposed to be equal to each other. मैं लाइंस लगाया गलती से. लाइंस लगानी आते हैं वेक्टर में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती इस तरह से. ये हमने इन दोनों वेक्टर्स को इक्वेट कर दिया. ठीक है. Now let's simplify this. Let's simplify this and see what we get from that. Left side पे हमारे पास आ गया 3 plus 20 40, and the second component is -2 plus 10t. That is equal to 67 plus 16t and -18 plus 12t. इनके पोजीशन वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए. अब आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व कर लें, and that should give you the result. Okay, this thing should be equal to this thing, and the second component should be equal to the second component, right? So let's say अगर हम पहली वाली यूज करते हैं, 3 plus 20 40, that equals 67 plus 16t. Let's see what that turns out to be. 8t equals 64 and t equals 8 from this. सेकंड से भी आपको सेम वैल्यू ऑफ टी मिलेगी अगर आप ट्राई करते हैं. दैट शुड गिव यू द सेम वैल्यू. अगर वो सेम वैल्यू नहीं मिलती, इसका मतलब है कि वो मीट करते ही नहीं है.
ठीक है, अगर आप सेकंड वाले पे नहीं सेटिस्फाई करती है टी की वैल्यू, तो इसका मतलब दे डोंट मीट एट ऑल, क्योंकि फिर कोई भी टी की वैल्यू नहीं है जिसके लिए पोजीशन वेक्टर्स इक्वल होंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि वो मीट करते हैं, तो उससे भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। -2 + 10t इक्वल्स -18 + 12t, उससे भी आपको सेम वैल्यू ही मिलनी चाहिए। That gives me 2t equals 16 here, and that also gives t equals 8. So that confirms that they do meet each other, and when they do meet each other, they meet when t equals 8. एक चीज उसने ये पूछी थी। दूसरी चीज उसने पूछी, फाइंड द पोजीशन वेयर दिस occurs. तो पोजीशन के लिए आप क्या करोगे, इसके किसी भी इनमें से किसी भी एक वेक्टर में इनपुट कर दें, फर्स्ट में इनपुट कर दें या सेकंड में इनपुट कर दें, उससे आपको पोजीशन मिल जाएगी। क्योंकि दोनों की सेम पोजीशन है, इट डजंट मैटर आप किस में इनपुट करते हो, फर्स्ट में इनपुट कर दो या सेकंड में इनपुट कर दो, इट डजंट मैटर, दोनों से सेम रिजल्ट ही मिलेगा। लेट्स से हम फर्स्ट में इनपुट कर देते हैं 3 + 24 × 8, और दूसरा क्या है -2 + 10 × 8, and that gives us 3 + 24 times 8, that's giving me 195, and -2 + 80, that is 78. This is the position where this occurs. That's the second thing that we were looking for. So we have the position and we have the value of t at that particular point. Okay, that was question number 8 from this paper. Let's move on to the next one. The next one that I want to do is question number 9. Let's have a look at this. It says the equation of a curve is y equals kx into e raised to power -2x, where k is a constant. We need to find dy over dx. Okay, let's do that. That's pretty straightforward. dy over dx is defined. K is a constant that remains as it is. It's a product here, right? Product को कैसे differentiate करते हैं? We have to apply the product rule. Remember, u into v का derivative क्या होता है? uv dash plus bu dash. What you can do is you can say k is a constant, तो k को हम बाहर रख लेते हैं, उसको as it is. अंदर फिर हम क्या करते हैं? Product rule apply करते हैं. We can say x is u and the second expression is v. So uv dash, u as it is, that means x as it is, into derivative of e raised to power -2x. What would that be? E raised to power -2x into derivative of -2x, which is -2, plus e raised to power -2x as it is, into derivative of x, which is just 1. Simplify this and that will give you the result. So we have -2k into x e raised to power -2x plus k e raised to power -2x. That is what the derivative here turns out to be. Okay, that's the first part. Let's move on. Let's just find the coordinates of the stationary point of this curve. Okay. You see, it's a very similar function that they have given us here. आपको वो working दोबारा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. The reason for that is it's of the same form. इनको कंपेयर करें, आप दोबारा से भी कर सकते हैं, that should give you the same result, लेकिन आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, because देखें सिर्फ क्या हो गया, k की जगह पे यहाँ पे 10 आ गया. That's the only difference between these two functions. वो constant पहले उसने k कहा था, अब वो constant उसने 10 लिख दिया यहाँ पे. तो हम डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख सकते हैं इस केस के अंदर. हम कह सकते हैं dy by dx should be this same expression, बस k की जगह पे क्या किया, 10 डाल दिया. So -2 into 10, that's into x e raised to power 2x plus 10 e raised to power -2x. Now, since we're looking for the stationary point, we put this derivative equal to 0. And we see what that gives us, -20 into x e raised to power -2x plus 10 e raised to power -2x. What we can do now is we can take e raised to power -2x common. In fact, let's go simplify the question. Anyway, let's take, let's say 10 e raised to power -2x common. What are we left with inside? -2x, right? Plus 1, this equals 0. That means either 10 e raised to power -2x equals 0 or -2x plus 1 equals 0. Now, how do we solve the first equation? First equation का solve करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास आएगा e raised to power -2x equals 0. You could try taking log on both sides, but remember, log of 0 is not possible. तो इस equation का कोई solution नहीं है. The reason for that is e is a positive number. किसी positive number की आप जो मर्जी power ले लें, 0 नहीं आ सकता कभी भी. So the first equation,
The first equation does not give you any solution. You say this is not possible. इससे कोई आंसर आपको नहीं मिलता. ठीक है? What about the second equation? The second equation gives you x equals 1 over 2. उसने कोऑर्डिनेट्स मांगे आपसे, तो y कोऑर्डिनेट भी चाहिए. इसको वापस इनपुट कर दें फंक्शन के अंदर. That will give you the corresponding y coordinate. What was the function now? Remember, this is the function y equals 10x e raised to power minus 2x. इसके अंदर इनपुट करते हैं इसको. We'll get the corresponding value for y from that. So we have y equals 10 into 1 over 2 into e raised to power minus 2 into 1 over 2. So that gives us 5 into e raised to power minus 1, or we can say 5 over e. Okay, so what is the point then? What's the stationary point? The stationary point therefore has these coordinates, 1 over 2 and 5 e raised to power minus 1, or we can write it like this, 5 over e. This is the point that we were looking for. All right, let's move on to the next one. Part C of this. Now it says use of part A to find integral of 4x e raised to power minus 2x. Okay. All right, that is interesting. So we have to use that part to evaluate this integral somehow. Okay, now what did we do in the first part? Let me write that down here. Part A का उसने कहा है. First part में हमने किया ये है कि हमारे पास एक function था which was kx e raised to power minus 2x. kx e raised to power minus 2x, ये एक function था हमारे पास. इसको हमने क्या किया? इसको हमने differentiate किया. और इसको डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिला था? हमें मिला था -2k into x e raised to power minus 2x plus k e raised to power minus 2x. This is what we had in the first part. अब देखिए हमें इंटीग्रेट करना है. हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. This is what we did in the first part. We have to use that somehow here. What can we do now? What we can do is we can say let's integrate both sides of this equation. इस equation की दोनों sides integrate कर दें. अगर दोनों sides पूछिए हमें क्या चाहिए? हमें इस तरह की फॉर्म चाहिए, राइट? जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है, इंटीग्रल ऑफ समथिंग. सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जो ये पार्ट है ना, हम ये किसी तरह से इसके इक्विवेलेंट बना देते हैं. तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दें. अगर integrate the left hand side and integrate the right hand side. दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? रिमेंबर प्लस माइनस हो रहा होता है तो हम अलग अलग इंटीग्रल साइंस लगा सकते हैं. अब लेफ्ट साइड पे क्या होएगा? लेफ्ट साइड पे तो ये इंटीग्रेशन हो रही है और ये डिफरेंशिएशन हो रही है. दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, सो दैट जस्ट लीव्स अस विद kx e raised to power minus 2x, right? On the right side, we have integral of minus 2k into x e raised to power minus 2x. इसका इंटेग्रल है. अब दूसरा इंटेग्रल क्या है? इंटेग्रल ऑफ k e raised to power minus 2x. अब देखिए हमें इवैल्यूएट क्या करना है. इवैल्यूएट करने के लिए उसने हमें ये एक्सप्रेशन दिया था 4x e raised to power minus 2x. अब देखिए एक प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना हमें नहीं आता, राइट? दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट वी हैव टू यूज आवर फर्स्ट पार्ट समहाउ. अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? x into e raised to power minus 2x वाली फॉर्म किधर आ रही है? वो फॉर्म हमारे पास यहाँ पर आ रही है, राइट? इसके अंदर हमारे पास वो वाली फॉर्म आ रही है जहाँ पे x into e raised to power minus 2x आ रहा है. तो इसमें हमें k की ऐसी वैल्यू इनपुट करनी है, सॉरी अबाउट दैट. k हमें ऐसे डालना है कि ये एक्सप्रेशन बन जाए किसी तरह से. बिफोर वी डू दैट, यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? इस इंटेग्रल को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट टू इवैल्यूएट. इसको हम अगर लेफ्ट साइड पे ले जाएं, that would give us 2k into e raised to power into x, into x e raised to power minus 2x
इसका integral that is equal to what we have on the right side, integral of k e raised to power minus 2x minus kx into e raised to power minus 2x. That is what we have here. अब देखें, compare this thing with this. k की जगह पे हमें क्या चाहिए ताकि वो हमें वही फॉर्म मिल जाए जो ऊपर हमारे पास है. What we can do is we can say अगर हम यहाँ पे k की जगह पे 2 डाल दें, we would get that thing, right? तो ये इक्वेशन पर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है? This can then be written as 2 into 2, which is 4x e raised to power minus 2x, and that's exactly what we wanted there. On the right side, we would end up getting integral of 2 e raised to power minus 2x with respect to x, and then we have minus k. K is again 2x e raised to power minus 2x. And now, how does this help us? Right side पे अब जो integral का sign हमारे पास रह गया है, that is on an expression that we know how to integrate. e raised to power minus 2x की integration तो हमें आती है, ये हम evaluate कर सकते हैं अब. 2 तो constant है, that remains as it is. e raised to power minus something की integration वही रहती है, e raised to power that thing, so it remains e raised to power minus 2x, but we have to divide by the derivative of this thing. Minus 2x का derivative क्या होएगा? Minus 2. Then we have minus 2x e raised to power minus 2x. And the integral turns out to be minus e raised to power minus 2x minus 2x e raised to power minus 2x plus c. That is the result that we get from this. All right. ये आपकी इस expression की integration हो जाएगी. I hope that makes sense. ये हमने यहाँ पे किया. इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते थे, वो हमें नहीं करनी आती, राइट? ये आप ए लेवल्स में जाके सीखेंगे इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन, बट फॉर नाउ यू कांट डू दैट. लेट्स मूव ऑन. पार्ट डी. ओके, नाउ इट सेज फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल. अच्छा, ये तो वही है जो हमने पिछले पार्ट में किया है, 4x e raised to power minus 2x, राइट? बस लिमिट्स लगा दी हैं. उसने लिमिट्स क्या लगाई हैं? 0 से लेकर 1 तक. सो व्हाटएवर वी फाउंड इन द प्रीवियस पार्ट, उसमें बस लिमिट्स डाल दें. माइनस e raised to power minus 2x minus 2x e raised to power minus 2x. रिमेंबर, जब लिमिट्स डालते हैं तो c तो वैसे ही कैंसिल हो जाना होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती है. वी कैन से लिमिट्स, इनपुट द लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1. पहले 1 इनपुट कर दें. लेट्स सी व्हाट दैट गिव्स अस. माइनस e raised to power minus 2 into 1, that's just minus 2 minus 2 into 1 into e raised to power minus 2 into 1. Subtract from this the case when you input 0. अब इसको 0 नहीं कर देना सीधा, because first term देखें 0 नहीं हो रही. That's just minus e raised to power minus 2 into 0 minus 2 into 0, ये 0 हो जाएगी, into e raised to power minus 2 into 0. Let's simplify this. This gives us minus e raised to power minus 2 minus 2 e raised to power minus 2. We have minus, that becomes plus. E raised to power 0. E raised to power 0 क्या होता है? That's just 1. Okay? And this thing is just going to become 0. So minus minus plus, that's just 0, plus 0. All right, this is the result that we are getting from this. Now, since we are looking for an exact value, उसको decimals में हम नहीं convert करेंगे. Our final answer is just going to be 1 minus 3e raised to power minus 2. इसको as it is रहने दें. Or if you want, you can also write it like this: 1 minus 3 over e square. And that's your final answer. All right, that's what we get in the last part here. That's it. Let's move on. That was question number 9 from this paper. Let's move on to the next one. This is question number 10. Just the second part was tricky. मैं देख रहा था वो है. First part is not that tricky. मैं first part आपको बता देता हूँ क्या करना है, and then I'll just jump to the second one. Because okay, let's do this. Third term of an AP is 10, so it's an arithmetic progression. It's an arithmetic progression. उसने कहा third term is 10, so that means T3 is 10. And the sum of the first 8 terms is 116. Find the first term and the common difference. हमें A चाहिए और D चाहिए. ये दो values, ये दो चीजें हमें figure out करनी है. We have to use the term formula and the sum formula.
what's the term formula? That's a plus n minus 1 times the difference. And what about the sum formula? That's 2a plus n minus 1, sorry, half by half into 2a plus n minus 1 times the difference. ये दो formulas हम use करेंगे, हमारे पास दो equations आ जाएंगी. ये हम देखते हैं क्या आता है. A plus n minus 1 into d. So a is unknown plus n minus 1. d3 है तो n की value 3 है. 3 minus 1 multiplied by d equals 10. So we have one equation, that's a plus 2d equals 10. The second piece of information is going to give us another equation, S8. That means half n. Sorry, मैंने formula में n पर मिस कर दिया. ये formula sheet में लिखा होता है, formula sheet से copy करेंगे, right? So half n into 2a plus n minus 1 into d है ये formula. Half into n is 8 into 2 times a. 2 times a, the value of a is unknown, plus n minus 1, n is 8, so that's 7 into d. This should equal 116. इससे एक और equation आ जाएगी. ये cancellation हो जाती है यहाँ पे. This is 4, 4 goes to the other side. 116 over 4 क्या हो जाएगा? Let's figure that out. 116 divided by 4, that's 29. This is the second equation that we have. All you have to do is solve these two equations simultaneously, and that will give you the result. Okay, अच्छा इतना ज़्यादा लंबा नहीं है. Let's do this quickly. A equals to 10 minus 2d. ये दूसरी में जाके input कर दें. That gives us 2a plus 7. और in fact a हमने subject बनाया है, इसको यहाँ पे input किया था, हमारे पास आएगा 10 minus 2d plus 7d equals 29. And that gives us 20 minus 4d plus 7d equals 29. And we get 3d equals 9. The value of d turns out to be 3. Put that back in the first equation, and that will give you the value for a. A equals 10 minus 2 into 3. And the value of a therefore turns out to be 4. ये हमें figure out करना था इस first part. That was pretty straightforward. Not much complication involved here. Let's move on to the next part. AOD हमने figure out कर लिया. In the next part it says, find the sum of 19 terms of this progression, starting with the 12th term. Okay, now that's a bit tricky. So we're talking about an AP, वो same arithmetic progression है हमारे पास, which has the first term of 4 and a difference of 3. This is an AP that we have. We want the sum of the 19 terms of this progression starting from the 12th term. Now we can't just do S19. That would be incorrect. हमें remember जो sum formula होता है आपका Sn equals half n into 2a plus n minus 1 into d, या तो दूसरा formula है half n into a plus l. दोनों formulas आपको क्या देते हैं? Sum of the first n terms. यहाँ पे उसने first n terms नहीं पूछा आपसे, उसने कहा है 19 terms का sum चाहिए, लेकिन start कहाँ से कर रहे हैं? Starting with the 12th term. So basically what we want is कि एक term आपकी 12th term होगी, उससे onward आपको terms चाहिए 19 terms, वो जहाँ तक भी complete होंगी. 12 से start करके 19 terms कितने हो रही होंगी? 30th तक आई थिंक, या 30th तक. ये terms जो है इनका sum चाहिए आपको. That is what we want. Okay. Now, one way of thinking about this is that we find the 12th term. 12th term find कर ले, और फिर we treat that as the first term of this progression. Difference तो 3 रहेगा ना. 12th term को हम first term treat करें और difference हम 3 रखें, और फिर हम उस पे sum formula लगा दें with n equal to 19. That's one possibility. There's a direct way of doing this, and that is like this. हमें ये formula क्या देता है? Sn. This gives us sum of the first n terms. What we want is the sum of the terms from 12 to 30. ये 19 terms बनेगी आपकी. ये sum चाहिए हमें. Rather than
doing S19, what you'll have to do here is, हम कहते हैं कि अच्छा ये T1 है, फिर T2 होगी कोई, and so on until we have T12. We can use a trick here. What we can do is we can say, let's find the sum of 30 terms. S30 निकाल लें, ठीक है? Sum of 30 terms निकाल लें. हम क्या करते हैं? Sum of 30 terms निकाल लेते हैं. Starting from the first one. उसमें से माइनस कर दें फर्स्ट 11 टर्म्स का सम. देखिए 12 को आपने इंक्लूड करना है उसके अंदर, 11 को नहीं करना. तो उसमें से हमने क्या किया, ये 11 टर्म्स को हम माइनस कर देते हैं. दैट मींस फर्स्ट 11 टर्म्स के सम को माइनस कर दिया. सो दैट्स S30 minus S11. That will give us the sum of the terms 12 to 30. 12 टर्म से स्टार्ट करके नेक्स्ट 19 टर्म्स का सम आपको इस तरह से मिल सकता है. ठीक है. वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम. This is what we can do here. तो अब इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, right? Let's just input values here now. Half into n is 30, into 2 into a क्या था 4, plus n minus 1, that means 29 into difference is 3. Subtract from this 1 over 2 into 11 into 2 into 4 plus 11 minus 1, which is 10, into the difference, which is 3. And that's it. ये evaluate कर लें और देखें आपके पास क्या आता है. Take a first bracket is going to give me 15 in first term. It gives me 15 into 8 plus 29 into 3. And that turns out to be 1425 for me. The first one. Subtract from this the second one. 11 over 2 multiplied by 8 plus 30. And that is 209. Let's subtract the 2. And it turns out to be 1216. And that is our final answer here. ठीक है. तो इसमें अगर आपको दरमियान वाली कोई टर्म का सम चाहिए ना, इस तरह से हम ये ट्रिक यूज करते हैं. हम कहते हैं कि अच्छा टोटल में से ये स्टार्ट वाली कुछ टर्म माइनस कर दें. And that will give you the terms that you're looking for. आपको ये चाहिए थी, आपने 30 का निकाला सम, उसमें से आपने पहले वाला सम क्या किया, subtract कर दिया. All right, let's move on. Let's move on to the next one. That's the last question that we want to do from this paper, and then we end. Before we do that, just a reminder to like the stream if you haven't already. It helps with engagement, helps more people find it later on. And also subscribe to the channel if you haven't already. You'll find a lot of helpful content here for A-level maths as well next year, and also for the next week or so. I will be uploading a lot of AdMaths content. मैं June 2022 वाले papers भी upload कर रहा हूँगा, उनके जो मुश्किल questions हैं, और फिर 2021 वाले papers हम पूरे solve कर रहे होंगे in the next week or so, inshallah. You can also find a lot of other helpful content in the description below. You'll find almost the complete syllabus covered in the first link that you see there. And then you also have a playlist by the name of quick revision videos. उससे आपको बहुत सारी topics के quick revision आप कर सकते हैं before exams. That's really helpful. You can also have a look at those playlists if you want. All right, and if you like this, make sure to share with your friends so that they can benefit as well. Let's start with this last question that we have for today. And then we end, and I wish you all the best after that for your exam tomorrow. Let's do this one. Question number 11. It says, in the vector diagram, the vector OP is equal to 2 times A. The vector SR is equal to 5 times A. OS vector is equal to 3B. And QR vector is equal to B. Given that PX equals vector PX equals lambda PS, write OX vector in terms of A, B, and lambda. अच्छा जब डायग्राम बनी होती है ना इस तरह से आपके पास, it's often simpler to just look at the diagram and see कि कौन सा path हम follow कर सकते हैं starting point से end point तक. तो आपको क्या करना है, OX find करना है. So we have to start from O and end at X.
अब O से X पे जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We can either do OP and then PX, or we could do OS and then SX. अब इसमें एक वेक्टर पता है, दूसरा नहीं पता। अब उसके लिए उसने कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे दी हुई है। देखें, फर्स्ट लाइन वाली सारी चीजें उसने डायग्राम पे रिप्रेजेंट की हुई है। सेकेंड लाइन में उसने कहा है PX वेक्टर इज लैम्डा PS. व्हाट डज दैट मीन? PX वेक्टर उसने बताया हुआ है, PX वेक्टर, this is lambda into PS vector. Can we find the vector PS somehow? Let's figure that out first of all. Vector PS. We want to go from P to S. क्या कर सकते हैं? We can go from P to O and then O to S, right? So we can say PO to OS. What's the vector PO? OP का opposite, which is minus 2A, plus OS, which is 3B. ये आपका हो गया वेक्टर PS. तो PX क्या होएगा फिर? उसने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उसने कहा PX is lambda into PS. So that will be lambda into minus 2A plus 3B. That's the vector PX. ये उसने information यहाँ पे दी हुई है हमें। अब हमें क्या करना है? OX find करना है. What we can do is we can say let's go from O to P and then from P to X. Now we know the vector OP. OP क्या है? OP is 2A. We have already figured out the vector PX. That's lambda into minus 2A plus 3B. Now we can just simplify this and see what that gives us. This would be 2A minus 2 lambda A plus 3 lambda B. Okay, this is the vector that we were looking for. It's you can leave it like this if you want, or you can write it like this as well. 2 minus 2 lambda into A, के जो A का कोएफिशिएंट है आप इस तरह से इकट्ठा लिख सकते हैं, और 3 lambda B अलग से लिख सकते हैं. Both of them are okay. It doesn't matter which exact form you have it in. All right, let's move on. Let's move on to the next part. Now it says, given that vector OX is equal to mu times OQ. OX is mu times OQ. अच्छा, अब उसने ये relationship दिया है, OX, OQ. Write down OX in terms of A, B and mu. अच्छा, पहले उसने OX निकाला था in terms of A, B and lambda. Now it says A, B and mu के terms में निकालें. दोबारा से OX निकालें, लेकिन अब mu के terms में निकालना है. अब इसने क्या information दी हुई है? OX vector is mu times OQ. Can we find OQ somehow? O से Q पे जाना है. We could go from O to P and then from P to Q. But the problem is we don't know what the vector PQ is. वो नहीं हमें पता. Well, can we find another path? If you think about it, if we follow the other path here, उसमें सारे vectors पता है हमें. We can go from O to S and then from S to R and then from R to Q. And that's much simpler, right? सारे vectors पता है. Let's do that. Let's find OQ first of all. OQ vector can be written as that we go from O to S and then we go from S to R and then finally we go from R to Q. OS vector is 3B, SR is 5A, and then RQ, QR is B, so RQ is opposite hoega, that's minus B. So that's minus B. This is the vector OQ. इसको simplify कर लें. This gives us 5A plus 2B. Okay, now what we want to do is we want to find OX. OX क्या है? OX is mu times OQ. So that's just going to be mu into 5A plus 2B. ठीक है, अब इसको अलग अलग लग सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं. That's your choice. If you write it separately, this 5 mu times A plus 2 mu times B. That's another way of writing the vector OX. In the next part, it says, find the values of lambda and mu. अच्छा देखें, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया? आपने OX निकाला है in terms of lambda. सेकंड पार्ट में आपने OX निकाला है in terms of mu. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. दोनों OX को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. They have to be equal.
So we can just equate them. We can say 2 minus 2 lambda into A plus 3 lambda B. This should equal 5 mu times A plus 2 mu times B. अच्छा, मैंने ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखे थे पहले कि A और B जो थे वो उनके पूरे कोएफिशिएंट से अलग से लिखे थे. अगर आपने नहीं लिखे तो आपको पहले ये करना पड़ेगा कि आपको A का कोएफिशिएंट अलग से लिखना पड़ेगा दोनों साइड्स के ऊपर और B का कोएफिशिएंट अलग से इस तरह से लिखना पड़ेगा. And then you can just compare both sides. Now, since both of these are supposed to be equal, that means 2 minus 2 lambda should equal 5 times mu, and 3 lambda should equal 2 mu. इससे आपके पास दो equations आ गई. You can solve these equations simultaneously, and that should give you the values for lambda and mu. Let's do that. 2 minus 2 lambda equals 5 times mu. That's the first equation that we have. The second equation is 3 lambda equals 2 mu. Okay, what do we do now? We can use substitution or elimination, whatever you want to do. अगर हम second equation में से कोई subject बना लें, let's say हम mu को subject बनाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 3/2 times lambda. We can put that in the other equation, and that will give us 2 minus 2 lambda equals 5 into 3/2 lambda. 2 को multiply कर दिया, that gives us 4 minus 4 lambda equals 15 lambda, and we have 19 lambda equals 4, and the lambda value is going to be 4/19. Put that in the other equation, that gives us the corresponding value for mu, 3/2 into 4/19. Let's see what that is. 12/38, which is 6/19. So mu is 6/19. That's the second unknown that we were looking for. So we have lambda and mu, both of them now. Make sense? ये हमने फाइंड करना था सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में. That was 4 marks. अगर आपने पहले दो पार्ट सही कर लिए हैं तो this was pretty straightforward. Just have to solve simultaneous equations. Okay, now it says write down the value of OX over OQ. Okay, OX over OQ. OX और OQ की रेशियो निकालनी है. OX is this and OQ is this whole thing. अच्छा, OX और OQ. अच्छा, इसमें रिलेशनशिप इसने यहाँ पे कहीं दिया हुआ था. इसने यहाँ पे कहा था OX या OX वेक्टर और OQ वेक्टर में रिलेशनशिप दिया हुआ था. बट रिमेंबर, जब एरो नहीं लगा होता ना, that means they're not talking about vectors, they're talking about distances, they're talking about lengths. वेक्टर नहीं लगा हुआ तो लेंथ की बात हो रही होती है, राइट? सो ये लेंथ OX और लेंथ OQ की बात हो रही है. अब वेक्टर्स का जो रिलेशनशिप होता है, लेंथ का भी वही रिलेशनशिप होता है. तो हमें ऊपर पता है कि OX जो था दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू OQ. वेक्टर्स का ये रिलेशन है, तो लेंथ का भी वही रिलेशन है. ठीक है, इट्स नॉट ट्रू द अदर वे अराउंड कि लेंथ का जो रिलेशन है वो वेक्टर्स का रिलेशन है, लेकिन जो वेक्टर का रिलेशन होता है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड इंक्लूडेड होता है, तो मैग्नीट्यूड की वही रेशियो होती है जो वेक्टर की रेशियो होती है. इसका क्या मतलब हुआ? OX over OQ should equal mu. म्यू की वैल्यू हमने निकाली है पहले, वो क्या थी? 6/19. so ये रेशियो क्या होनी चाहिए? दिस रेशियो शुड बी 6/19. ऑल राइट. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ px over xs. अच्छा, px and xs. px कहाँ गया? px and xs. अच्छा, ये भी स्ट्रेट लाइन है. इसका भी रिलेशन इसने क्या दिया हुआ था पहले? इसने कहा था px is equal to lambda ps. अच्छा, उसने रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है. px और lambda ps दिया हुआ है. अच्छा, what we can do now is we can say px is equal to lambda ps. ये रिलेशन दिया हुआ था पहले. रिमेंबर, ये लेंथ का रिलेशन है, वेक्टर्स का हम जो यूज कर रहे हैं रिलेशन, लेंथ का यूज कर रहे हैं अब यहाँ पे, क्योंकि हमें लेंथ की बात हो रही है, वेक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पे. इसका मतलब ये हुआ जो px और ps की रेशियो है वो क्या होनी चाहिए? लैम्डा. और लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर 4/19. Okay, so this is the ratio between px and ps. All right, now px and ps.
Okay. This is what the line looks like. ये P है, ये X है और ये S है. हमें क्या मिला है कि अगर पूरी लेंथ 19 है, अगर PS 19 है, right, if the whole thing is 19, then PX is how much? PX is 4. हमें फाइंड क्या करना है? PX over XS. तो अगर पूरी 19 है, PX 4 है, तो ये बाकी पार्ट कितना आएगा? 19 minus 4. This part is going to be 15. इसका क्या मतलब हुआ? The ratio PX over XS. So if PX is 4 units, XS should be 15 units. And that is what we were looking for here. ये आपके पास ये रेशियो आ गया. ठीक है? And that concludes this question as well. And that's it. All right, so today we discussed all the difficult questions that we had in the November 2022 papers. All right, I hope you find this helpful. If you find this helpful, make sure to share with others, at least one other friend who might find this helpful. And if you have any questions, you can post them in the comments below. You can also find a lot of other helpful content in the description of this video. You'll find the complete syllabus covered, almost complete syllabus covered. You'll find a playlist for that. You find some quick revision videos there as well that a lot of students find extremely helpful before their exams. And I'll leave you with that. All the best for your exam tomorrow. I'll see you next time after exam for your paper 2 preparation. That's it for now. Allah Hafiz.